व्यूअर्स, जो अगस्त का पहला वीक होता है फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त, ये हम एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाते हैं। हमने भी सोचा कि इस सिलसिले में थोड़ी सी अवेयरनेस की जाए और इस रिगार्डिंग हमने यहाँ के SDH पटन के कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर सैयद अरशीद से बात की इस बारे में। वेलकम डॉक्टर साहब। हाँ जी, वेलकम मैडम दीक्षा जी। सर, हमें बोलिए कि जो ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, इसका मोटिव क्या है और जो इसके क्या बेनिफिट्स है फॉर बोथ इन्फेंट एज वेल एज मदर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। जो ये ब्रेस्ट फीडिंग, वाई देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ग्लोबली हम देखते हैं अगर 5 बच्चे जन्म लेते हैं, 2 बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग होती है, 3 को नहीं होती है। इसका मतलब है कि हाफ द न्यू बेबीज आर नॉट ब्रेस्ट फेड। इसका मकसद है इन लॉन्ग रन वी कैन से 50% ऑफ द बेबीज आर, लेस देन 50% ऑफ द बेबीज आर ब्रेस्ट फेड एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ द बेबीज आर नॉट ब्रेस्ट फेड। और ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने का मकसद क्या है? इसका मेन कंसर्न यह है कि हमारे गांव और हमारे शहरों में जो ये बच्चा पैदा होते हैं, स्ट्रेस इसका मकसद इसलिए देना ताकि उनकी माएँ जो है उन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इट इज़ अ नेचुरल फूड फॉर द न्यूनेट या किड और द बेबी, एंड इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियल और सप्लीमेंट कैन नॉट टेक द पोजिशन ऑफ ए नेचुरल फूड। जो ब्रेस्ट फीडिंग अल्लाह ने बनाया है इसके लिए it meets the nutritional demands of the child and the metabolic demands of the child। इसमें अल्लाह ने खुद रखा है, उसकी परसेंटेज है 90, अराउंड 90% इसमें वाटर है, फिर उसमें कुछ परसेंटेज है 1% प्रोटीन, 4% है इसमें लिपिड और 6% है उसमें, अराउंड मोर देन 5% उसमें है जैसे कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसमें मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की डिमांड को मीट करती है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसे क्या ये ऊपर से ही बनाई है, नेचर ने बनाई इसके बच्चे के लिए ताकि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स को मीट करे, ताकि उसकी न्यूट्रिशन डिमांड्स को मीट करे। इसके अलावा मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई कैन से थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सब्सटेंसेस जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाती है, जो डेवलपमेंट में इसके काम आती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती है, जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ साथ उसकी एनर्जी में डिमांड्स जो एनर्जी डिमांड्स वो इसको मीट करती है, और साथ साथ उसको वो बाहर वाले इस तमाम इन्फेक्शन से बचाती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी कमियां रह सकती हैं ऐसे बच्चे में जिस बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया जाएगा, बल्कि हमने देखा है कुछ लोगों में उनको आर्टिफिशियल मिल्क देते हैं, काउज मिल्क देते हैं, दैट्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर इट। उससे क्या हो सकता है, उस पहली प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप उसको आर्टिफिशियल मिल्क दे सकते हैं उसे डायरिया हो सकता है। जब डायरिया हो सकती है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो गया। आपने सुना हो गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफिशिएंसीज इन कैलोरी न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन हो सकता है बच्चे में, प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं मेरसनेस, क्वेश्चर। These diseases can appear because of this thing, because it leads to malnutrition। हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, आर्टिफिशियल मिल्क या गाय का दूध देते हैं, इससे डायरिया होते हैं, पेन करते हैं, ब्लोटिंग होती है, सारा सिस्टम तब धर्म भरम होता है। हाँ, वी कैन गिव इट बट नॉट इमीडिएटली, एटलीस्ट फॉर 6 months। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सब्स्टिट्यूट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर वीनिंग वी कैन गिव इट। We can, after some time, even it is recommended, we can give breastfeeding for 1 or 2 years। We can add, after 6 months, we can other foods। Yes। We can add banana, we can little bit dal, we can add other things, we can add little bit grinded fruit, we can add that, but there is no substitute for the breastfeeding, at least for the initial months। Doctor sir, what is the limit for this breastfeeding? You are absolutely right। I can say there are varied opinions regarding it। At least for 6 months, there is no dispute. There is no variability among even concerned people, variability in the people or nutritionists as far as this breastfeeding. So either for 6 months, there is no substitute for breastfeeding। We can add after 3-4 months little bit of banana, but I don't think breastfeeding you can stop. But there's a variability. Some people say you can 1 or 2 years, some say after 2 years. But after 2 years, I don't think breastfeeding is helpful for the baby।
He needs, by that time, he has small, by that time he can take other foods, but I don't think breastfeeding can be supplement. Breastfeeding can be a food after 2 years. Breastfeeding can be very important for 6 months to 1 year, but after that, you can add other foods what we take in adulthood. Sir, is there any message for our nursing mothers? Yes, breastfeeding is very important. I can say it has many very good effects for the mother. Number one, psychologically the mother becomes very happy. Nursing a child in her lap and feeding her milk, this gives a psychological relief to her. She has suffered 6-9 months. She was in a state of pregnancy. That's not although that's a physiological normal state, but that I can say that's again a period of stress, although not a period of disease. After 9 months, once they give birth a child, she has a child in lap. She takes milk from her breast. She becomes happy, and that the lips of the child and the child in the lap gives a soothing effect to the mother. She becomes psychologically happy, and she also says that my tough period is followed by now a calm and cool period. Having a kid in her lap and feeding her psychologically feels free. And number two, why I should say that all ladies should feel breastfeed these children. That number one point. For child, this is very important. There is no substitute for it. Number two, for the mother, you know that after giving psychological relief to mother and the compassionate mother, and she becomes psychologically cool and calm. Second thing is that you know that there is something called lactational amenorrhea. After mother delivers a child, or she will not resume her periods at least for a few months. If she really breastfeeds her baby, this lactate amenorrhea will lengthen. That means it can, so that she does not conceive, because this acts as a natural contraceptive, physiological contraceptive. So as a doctor, I can say the ladies should feel their breastfeed. It has a very good effects very beneficial for mother, in the form of that some ladies which don't feed their children, after 3-4 months, even having a small kid of 3 or 4 months in their lives, they again become pregnant. So that thing is prevented by natural breastfeeding to the kid. That delays her resuming her menstrual cycle and acts as a natural contraceptive method. And this is one of the second factors. Third thing is the breast is again protected by all the deleterious diseases, even all the organs, because of breastfeeding. It has overall very beneficial effects for the child. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab, for sharing your valuable knowledge on this day. Thank you so much. Thank you.